Hey guys, I'm Parul and welcome back to my channel. आज की वीडियो is about one of the most talked and criticized rule. Yes, you guessed it right. It's Rule 86B. वीडियो स्टार्ट करने से पहले if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get an update whenever I post a video. So without wasting any time further, let's get into the video. Government introduced Rule 86B wide notification number 94 by 2020 and this is effective from 1st January 2021. विद दिस रूल गवर्नमेंट ने आपके क्रेडिट लेजर में जो इनपुट टैक्स रेट पड़ा है उसकी यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू कैन ओनली डिस्चार्ज 99% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थ्रू योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर मैं इसे दूसरी तरह से पुट करूँ तो नाउ यू हैव टू डिस्चार्ज मिनिमम 1% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ये काफ़ी हार्श प्रोविजन है एंड इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन अ बिजनेस. बट ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इसकी भी एक लिमिट डिफाइन की गई है. तो अगर आपकी टर्नओवर अदर देन योर एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड योर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सीड्स मोर देन 50 lakhs इन अ मंथ तो आप पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा. तो आपकी टर्नओवर में से अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई हटा दूँ दैट इज़ योर एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई हटा दूँ. एग्जेम्प्ट सप्लाई इफ़ यू डोंट नो व्हाट गेट्स इंक्लूडेड इन एग्जाम सप्लाई तो मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी. तो अगर मैं टर्नओवर में से जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई हटा देती हूँ उसके बाद जो टर्नओवर बचती है इफ़ दैट इज़ मोर देन 50 lakhs तो येस आप पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड ये रूल आपको GSTN वाइज देखना है. इट्स नॉट ऑन पैन बेसिस. हर GSTN के लिए आपको अलग अलग चेक करना है कि वेदर दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन यू और नॉट. बट देर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स एज वेल. सो अगर आपकी टर्नओवर इज़ लेस देन 50 lakhs तो आप इस रूल में फॉलो ही नहीं करोगे. बट इवन इफ़ इट्स मोर देन 50 lakhs तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूजन्स प्रोवाइड करी है एंड अगर आप उन एक्सक्लूजन्स में फॉल कर जाते हो देन स्टिल इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज एक्सक्लूजन्स. एक्सक्लूजन नंबर 1 इज़ the said person. The person will include your company as well, your proprietor, कर्ता, managing director and बाकी सब लोग जो इसमें मेंशन है they have paid income tax more than 1 lakh rupees in each of the last 2 financial years for which the time limit to file the return has expired. If I focus on the word income tax, तो income tax would not only include your self assessment tax जो आपने कैश में पे किया है, it will include your TDS, it will include your advance tax and even your minimum alternate tax. So all these taxes will get included in this limit of 1 lakh. Next, now focusing on another thing, in each of the last 2 financial years. So you must have paid more than 1 lakh in both the years. So if you have paid like 10 lakhs in 1 year and there was a loss in the second year, still you will not fall in this exclusion. You should have paid 1 lakh, more than 1 lakh in both the years. The time limit to file the return of income has expired. So to fall in this exclusion, we'll see the ITRs of 1718 and 1819. Reason being because of COVID-19 due dates ITR की बार बार extend हुई है and even now ITRs जो audit वाली हैं they're still pending. उनकी due date अभी भी 15th Feb है. So for falling into this exclusion, we'll check the ITRs of 1718 and 1819. The next 2 exclusions are related to refund. That is, a registered person has received a refund of more than 1 lakh rupees on account of unutilized input tax credit. So in GST, as per proviso to section 54 subsection 3, you can only receive a refund of unutilized input tax credit in 2 cases. Number 1 is when you have made a zero rated supply, that is when you have done an export without payment of tax, then you can claim the refund of unutilized input tax credit. Another one is in the case of inverted duty structure, that is the tax rate on inputs is higher than the tax rate on your output. In both these cases, you get the refund of unutilized input tax rate. So over here, अगर आपका refund because of these 2 cases is more than 1 lakh rupees, then you will not Rule 86B will not be applicable on you. The next exclusion is for those persons who have already discharged more than 1% of their tax liability in cash when seen cumulatively. तो अगर मैं अप्रैल से दिसंबर तक देख रही हूँ and you have discharged more than 1% in cash, then this rule will not be applicable on you. But obviously इस exclusion को we need to check it monthly. Next
is it will not be applicable in case of government departments, your PSUs, local authorities. सो दीज आर द एक्सक्लूजन. अगर आप इन एक्सक्लूजन्स में कहीं भी फॉल कर रहे हो देन दिस रूल 86B विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू. बट हाँ, अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो एंड योर टर्नओवर इज टैक्सेबल टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs इन अ मंथ, तो रूल 86B इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन यू. Now let's understand the applicability of this rule 86B through some examples. As you can all see, there are two questions on the screen. I really want you guys to pause this video for a minute, think about the answer of this question, write them in the comment box below, and then come again on this video to check the answer. So in question number 1, the taxable turnover of PQR hotels is 1.5 crore in a month, and out of in this 1.5 crore, 70 lakhs is provided to SEZ employees. So with payment or without payment doesn't matter. In both the cases, it will be a zero rated supply, and we need to deduct this from this 1.5 crore. Next is your alcoholic liquor for human consumption. So alcoholic liquor for human consumption is a non-taxable supply, and non-taxable supply gets included in exempt supply. If you don't know what gets included in exempt supply, so I'll provide the link of the video which I've made on exempt supply in the description box below. So if I deduct this 70 lakhs and this 32 lakhs from 1.5 crore, so I'm left with only 48 lakhs. So as 48 lakhs is less than 50 lakhs, so this rule 86B will not be applicable on me. And in second question, the value of my other taxable supply, which was 48 lakhs in first case, has increased to 53 lakhs. So in this case, rule 86B will be applicable, and I need to discharge I need to discharge 1% of my tax liability in cash. That is 53 lakh ka 18% and uska fir 1%. This much I need to discharge in my cash. That's all about rule 86B. We all know government introduced this rule to to eliminate these fake invoices, but I'm really not sure whether this is a complete mechanism to keep a check on circular trading. बट इससे जेन्युइन टैक्स पेयर्स काफ़ी सफ़र करेंगे. बड़े टैक्स पेयर्स बिकॉज ऑफ दैट 1 लाख की लिमिट ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे, बट छोटे टैक्स पेयर्स ऑब्वियसली सफ़र करेंगे, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, जहाँ पे लास्ट ईयर बिजनेसेस काफ़ी इफेक्ट हुए हैं. उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि इवन इफ मेरे पास क्रेडिट है तब भी मैं 1% कैश में पे करूँ. तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ होल in taxpayers' pocket and obviously increase the work of our community as well. So yeah, that's all for today from my side. I hope you like this video. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, and yes, do subscribe to my channel. Thank you. That's all about rule 86B. We all know government introduced this rule to to eliminate these fake invoices, but I'm really not sure whether this is a complete mechanism to keep a check on circular trading. बट इससे जेन्युइन टैक्स पेयर्स काफ़ी सफ़र करेंगे. बड़े टैक्स पेयर्स बिकॉज ऑफ दैट 1 लाख की लिमिट ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे, बट छोटे टैक्स पेयर्स ऑब्वियसली सफ़र करेंगे, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, जहाँ पे लास्ट ईयर बिजनेसेस काफ़ी इफेक्ट हुए हैं. उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि इवन इफ मेरे पास क्रेडिट है तब भी मैं 1% कैश में पे करूँ. तो it is definitely going to put a hole in taxpayers' pocket and obviously increase the work of our community as well. So yeah, that's all for today from my side. I hope you like this video. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, and yes, do subscribe to my channel. Thank you.